Assalamu alaikum students, Ma'am Sadaf here, and today we are going to perform a confirmatory test for the presence of carbohydrates, and then we will discuss about the categories of carbohydrates like reducing and non-reducing sugars which are present or not. First of all, talking about the carbohydrates, these are the energy-rich organic compounds which are decomposed and then we get energy in the form of ATP, and carbohydrates are decomposed and hydrolyzed to glucose, and after this through the process of cellular respiration, the glucose is decomposed and we get the 36 ATPs out of it. So in order to confirm whether the carbohydrates are present in the solution or not, we have to perform Molish test, and if the result for the Molish test is positive, it means in our solution carbohydrates are present. Then in the next step, we have to perform 2 to 3 different reactions or different steps in order to confirm what kind of carbohydrates are present. They could be the categories of carbohydrates, like they could be reducing sugars and they could be non-reducing sugars. So in order to confirm the presence of reducing sugars, we have to perform Benedict test, and in order to confirm the presence of non-reducing sugars like starch, we have to perform the iodine test. Now before moving into detail, I have to tell you what are the reducing and what are non-reducing sugars or carbohydrates. Reducing sugars are the sugars like glucose, fructose, which have free aldehydic and ketonic group, which has the capability to reduce other reagents. And non-reducing sugars, if we talk about the starch is non-reducing sugar. They don't have free aldehydic group and ketonic group available with them, and sucrose is also non-reducing sugars. So now we are going to perform tests for their confirmation. So let's start with the operators available. So students, now performing the experiment for the confirmation of reducing sugars like glucose. We have this glucose solution that we have already prepared it, and as I have already told you, we require the Benedict reagent. So what I'm gonna do कि मैं सबसे पहले एक लूँगी टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे हमने तकरीबन 2 ml डाल लेना है अपना ग्लूकोज सोल्यूशन विच वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो ये तकरीबन हमने चलें इसके अंदर ये ग्लूकोज सोल्यूशन डाल लिया है, तकरीबन 30 से 2 ml ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन. अब हमने इसके अंदर क्या डाला है, हमने इसके अंदर अपना बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला है. तो इसके भी हमने तकरीबन 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट वी विल ऐड इट. सो अच्छे से शेक करके इसके अंदर हमने डाल दिया. नाउ वी हैव एडेड द बेनेडिक्ट रिएजेंट इन दिस सोल्यूशन. इसको क्लोज कर देंगे. अच्छा, नेक्स्ट अभी इसकी कंफर्मेशन के लिए वी हैव टू हीट इट, और हीटिंग करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें यूज़ करना है दिस होल्डर, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हीट करेंगे तो हमारा हैंड जल जाएगा और हमें बर्न हो सकता है. सो वी रिक्वायर दिस होल्डर. ठीक है, इसके अंदर हमने इसको फिक्स कर लिया बच्चा. ठीक है, फिक्स करने के बाद अगर हमने इसका पॉजिटिव टेस्ट अगर हमारे पास आएगा तो इट मीन्स ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट, और इसके टेस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट के लिए हमें हीटिंग करनी है. हीटिंग के लिए आप स्प्रेड लैम्प को यूज़ कर सकते हो, और इधर आप इसके ऊपर डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली हीट इट, और वेदर यू कैन यूज़ दिस ट्राईपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज, और इसके ऊपर आप वाटर बाथ के ज़रिए यानी कि इस तरह से इनडायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं. फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग, फॉर example, we are having any solution, so we put the test tube in this वाटर बाथ लाइक दिस. सो इसमें क्या होती है, इसकी इनडायरेक्ट हीटिंग होती है. आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली हीटिंग अगर करना चाहते हो सो यू हैव टू यूज़ दिस होल्डर. सो व्हाट आई एम गोना डू कि अब मैं इसको करूँगी हीट, और हीट करने के बाद अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कैसे आएगा कि इसके आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बने चाहिए. इसका जो ब्लू कलर है बेनेडिक्ट का, इट विल गेट चेंज इनटू येलो एंड देन टू ऑरेंज एंड देन टू रेड coloration. So I'm directly heating this solution over this spirit lamp, and we will see that slowly the color will get changed. And what's happening actually, this solution, if it is having reducing sugar, then it will reduce the copper sulfate into a reduced form, that is cuprous oxide, and the color of it will get changed. Now you can see how beautifully the color is changing from blue to orangish color, and then it will turn red. So you can see I am slowly heating this. It is not hurting my hand as I am using this holder, so it is not harmful or it's not dangerous. You can either directly heat it, or you can also use this heating
by water bath. You can see how beautifully the color has been changed from blue to green, and then yellow to orange, and then from orange to brick red coloration. Okay, you can see the change of color from blue reagent to this color red precipitate has been formed, and it shows that in this solution there is a presence of reducing sugar as we have used the glucose. So this is the confirmatory test for the presence of glucose. This change in color indicates the presence of glucose, that is reducing sugar. So this is all about for the presence of glucose. Thank you. Okay students, now we are going to perform confirmatory test for the presence of starch, that is non-reducing sugar, and for this we require starch solution which I have already prepared. And for this, along with the starch solution, for the confirmation we use iodine solution. So the iodine solution's positivity test gives the confirmation that the starch is present in the solution. So let's add 2 ml of starch. तकरीबन हमने 2 ml starch इसके अंदर ऐड कर लिया अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर. आप इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो यूज़ दिस टेस्ट ट्यूब होल्डर. तो ये ज़्यादा अच्छा होता है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, इसलिए आई ऑलवेज डू द एक्सपेरिमेंट और वी ऐड द रिएजेंट्स बाय यूजिंग दिस टेस्ट ट्यूब होल्डर. अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्च सोल्यूशन ले लिया. सो अगर ये अननोन सैंपल भी होता तो आयोडीन सोल्यूशन डालने से अगर तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास जो अननोन सैंपल है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है. सो अभी हम इसके सामने आपके करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसका कलर चेंज होता है. यू कैन सी द आयोडीन सोल्यूशन. इस वक्त हमारे पास ब्राउन कलर का आयोडीन सोल्यूशन होता है, एंड व्हेन वी विल ऐड दिस आयोडीन सोल्यूशन इनटू द स्टार्च सोल्यूशन, इफ दिस इज द स्टार्च and if this is non-reducing sugar, the iodine color will get changed to black precipitation. So if I'm adding this, you can see there is a change in color. Okay, we have added few drops of iodine, and the color has been changed from brown to this purplish black precipitation, and this coloration indicates that the iodine test is positive and the non-reducing sugars gives positive test with iodine. So the presence of starch has been confirmed for this. Okay. Okay students, we have another confirmatory test for the presence of starch, and it's very interesting to know that we have different foods in which starch is present in abundant. For example, we have this potato, and we know that in this potato we have lots of starch, and you can directly use this potato for the testing, and you can also use a potato extract. I'm having the both. So let's see कि ये जो हमने potato का लिया है sample, इसका पोटैटो एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर स्टार्च मौजूद है कि नहीं, ये हमारे पास फूड सैंपल है. तो अब हमने क्या करना है, अगेन हमने ये पोटैटो एक्सट्रैक्ट के अंदर मैंने डालना है आयोडीन को. सो इट्स वेरी interesting knowing के what color would be produced by adding drops of iodine. So आपने ये iodine के drops डाल देने हैं इस potato extract के अंदर, or we will see whether there is a change in color or not. And you can see the color has been changed if adding few more drops of iodine. So you can see the color of the potato extract has been changed, and this change in coloration, it indicates that the potato extract contains starch. So you can see the color of the solution has changed to purplish black coloration. Okay, so you can also use this test by directly adding iodine to this potato, and let's do this. और इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा. What I'm going to do, I'm going to add the few drops of iodine over this potato, and with the passage of time you would see कि there is a change in coloration of the potato. और क्योंकि इसके अंदर starch होता है तो अब इसको थोड़ी देर हमें इसका वेट करना पड़ेगा. and you can see slowly इसके अंदर build हो रहा है, coloration is getting changed. जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है पोली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड द पोटैटो का कलर जो है इस जगह पे जहाँ पर हमने आयोडीन डाला है इट विल
turned to black coloration. You can see there is a change in coloration of this potato, and potato is getting black over the area where we have added this iodine. So it shows that the potato is also containing starch, as it is giving positive test with iodine. So the color of iodine was brown, and now this has turned to blackish coloration, you can see. So this was another confirmatory test for the presence of starch. We are having different food samples and iodine is present or not. सो स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पर पोटैटो एक्सट्रैक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो यू कैन सी द चेंज इन कलरेशन विद द पोटैटो एक्सट्रैक्ट. और अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पर यू कैन सी, जब हमने डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई किया तो अगेन द कलर हैज़ चेंज. सो यू कैन सी दिस कलर हैज़ this color is because of the presence of the starch in this potato, and the iodine gives this black coloration with starch. So this is the confirmatory test for the presence of starch. Thank you.